Good morning to all the students. So, in the last lectures, we have discussed about the pancreas. In the last three lectures, we were discussing about the pancreas, the basis of the insulin, how insulin is synthesized, then stored, and how is it released by the beta cells of the pancreas. So, in all the three lectures, we have discussed about the general introduction of the pancreas, the basics of the pancreas in insulin. We have drawn various diagrams now. So let's continue our lecture, part 4 of the pancreas. So in today's lecture, we will be discussing about the insulin synthesis only, how insulin is synthesized. So part 4, continuation of the previous lectures, how insulin synthesis starts. So as you know, I request all of you to please draw this diagram, क्योंकि आपको जो आज का lecture है वो इस diagram के through proper समझ में आएगा, right? Okay, so basically you all know that insulin is a peptide hormone. Insulin एक peptide hormone है. So it involves all the steps. So it involves all the steps of synthesis, storage, and processing of protein synthesis. So as you all know, insulin is a peptide hormone. So it will involve and it should involve all the steps of synthesis, storage, and processing of the protein synthesis. So first step in protein synthesis is, what's the first step? Let's start. For protein synthesis, firstly there must be genetic code present in the nucleus. What's the first step? In the first step for protein synthesis, firstly there must be a genetic code present in the nucleus and in the DNA. So on chromosome number 11, 11th chromosome pe, on chromosome number 11, there are short arms and the long arms. On chromosome 11, there are short arms and long arms. At the short arm, there is a gene for insulin. At the short arm, क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है. जो शॉर्ट आर्म होती है वहां पे एक जीन होता है. देयर इज अ जीन प्रेजेंट एट द शॉर्ट आर्म फॉर insulin. So at short arm there is a gene for insulin. Now when insulin is going to synthesize, जब insulin synthesize होने वाला होगा, this gene gets activated and its DNA sequence is opened. So let's understand this by this diagram. In this diagram I have drawn a cell. एक cell draw किया है हमने यहाँ पे. I have drawn a cell and chromosome number 11. So in the next diagram I'll show how the DNA sequence gets opened, right? So हमने बात करी on chromosome number 11 there are short arm and the long arm. Now let's suppose this is a gene for the insulin. ये है gene insulin के लिए. And when insulin is going to synthesize, this gene gets activated and its DNA sequence gets opened up. I'll show you in the next diagram. Let's focus on this diagram. हमने सेल में से इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया. This is the gene for the insulin synthesis. This is the gene at the short arm. At the short arm, there it is a gene for the insulin. And when this insulin is going to synthesize, this gene gets activated. ये जो gene है short arm पे, ये जो जीन है शॉर्ट आर्म पे, ये जीन है इंसुलिन के लिए. अब जब इंसुलिन सिंथेसाइज होने वाला होगा, ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा और इसका जो डीएनए है इट गेट्स ओपनड. ये ओपन हो जाएगा. ये डीएनए दिख रहा है हमको, ये डीएनए सीक्वेंस है, ये ओपन हो गई यहाँ पे. डीएनए सीक्वेंस गेट्स ओपनड. सो क्रोमोसोम नंबर 11 देयर इज अ शॉर्ट आर्म एंड द लॉन्ग आर्म, एंड एट short arm there is a gene for insulin. And now when insulin is going to synthesize, this gene gets activated and its DNA sequence is opened. तो ये जीन था इंसुलिन के लिए. जब इंसुलिन सिंथेसाइज होने लगा तो जीन एक्टिवेट हो गया और इसका डीएनए सीक्वेंस ओपन हो गया. राइट? टिल नाउ इट इज क्लियर्ड. Now the process of transcription starts. अब डीएनए सीक्वेंस तो ओपन हो गई. अब क्या होगा? Now what happens? Now the process of transcription starts. And in this process, messenger RNA is formed. अब जब DNA sequence open हो गई, then what happens? Then the process of transcription starts. And in this process of transcription, messenger RNA is
formed. Messenger RNA molecule is formed. So first step is transcription. Messenger RNA is formed. So first step is transcription, right? Now the first step was transcription. Just remember, first step is transcription. Now what is transcription? Activation of the gene and from the DNA sequence which transcribes RNA sequence. Now once the mRNA is formed, messenger RNA is formed, it will come into cytoplasm. Now अब क्या हुआ? Messenger RNA बन गया हमारा. Now once the mRNA, messenger RNA is formed, ये क्या होगा? It will come into the cytoplasm. Then messenger RNA, after coming into cytoplasm, it will get attached with the ribosome. अब क्या हुआ? हमने बात करी messenger RNA बन गया. Once a messenger RNA is formed, it will come into the cytoplasm. Cytoplasm में जब ये enter करता है, once the mRNA enters the cytoplasm, once it comes into the cytoplasm, it will get attached with the ribosomes. ये ribosome से attach हो जाएगा. क्यों? Because ribosomes will translate the sequence of messenger RNA into amino acid sequence to make a protein, right? I'll go back to the diagram here. So what happens? जब भी मैसेंजर आरएनए एंटर करता है साइटोप्लाज्म में तो ये अटैच हो जाएगा राइबोसोम से. राइबोसोम से इसीलिए अटैच होता है, रीजन बीइंग क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम विल ट्रांसलेट द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस टू मेक अ प्रोटीन. सो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से इसीलिए अटैच होता है क्योंकि राइबोसोम ट्रांसलेट कर देता है mRNA मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस टू मेक अ प्रोटीन. सो लेट्स सपोज here it is a ribosome. ये जो है here it is a ribosome. Here this is it is a ribosome. Let's suppose it's a ribosome. Now when messenger RNA comes, it will associate with ribosomes which are free inside the cytoplasm. अब क्या होगा? हमने सपोज करा ये है हमारा राइबोसोम, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये है हमारा राइबोसोम. Let's suppose it is a ribosome. Now what happens? When the messenger RNA comes, it will associate with the राइबोसोम्स विच आर फ्री इन द साइटोसोल. ये हमने बात की थी कि mRNA जो है वो किससे अटैच होता है? राइबोसोम से. लेकिन सबसे पहले ये उन राइबोसोम से अटैच होगा जो कि फ्री हैं, विच आर फ्री इन द साइटोसोल. एंड इनिशियल and then what happens? Initial translation will start, and during the initial translation the sequence of RNA will translate into sequence of amino acid, and then peptide chain starts forming, and that peptide chain which will start forming, let's suppose this is a peptide chain. हमने क्या बात करी कि ये राइबोसोम है. Let's suppose this is a ribosome. Now when messenger RNA comes, this is a messenger RNA. Now when messenger RNA comes, it will associate with those ribosomes which are free in the cytosol. ये उन राइबोसोम से अटैच होगा जो कि फ्री है साइटोसोल के अंदर. And initially translation starts and initial translation begins. Initial translation start हो जाएगा. During the initial translation, अब जब initial translation begin हो गया, start हो गया, उस टाइम पे क्या होता है? RNA की sequence translate होती है amino acid की sequence में. The sequence of RNA will translate into sequence of amino acids, and then peptide chain starts forming. ये जो बन रही है peptide chain starts forming, and that peptide chain which is forming, this chain is signal sequence. ये पेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड चेन है. This peptide chain, this initial peptide chain which is being formed is called as the signal sequence. And as soon as the signal sequence is formed, this consists of the hydrophobic amino acids, right? हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था वो बेसिक स्ट्रक्चर पेप्टाइड का सी शेप में, जिसमें सिग्नल सीक्वेंस था, ए चेन थी, बी चेन थी, सी चेन थी, right? So this chain is the signal sequence, and as soon as the signal sequence is formed, this consists of the hydrophobic amino acids, right? So till now it is clear what happens. As soon as signal sequence, जैसे ही signal sequence chain बनती है, it consists of the hydrophobic amino acids. Consists of the hydrophobic amino acids.
I request all of you to please draw this diagram. In order to better understand the lecture, you just draw this diagram in your copies. This initial sequence. Now what happens? This initial sequence क्या करेगी? ये जो बनी है signal sequence, ये क्या करेगी? This will take the messenger RNA and ribosome to the rough endoplasmic reticulum. मैंने जो समझाया वही steps मैंने PPT में यहाँ पे slide में लिखे हैं. Insulin is a peptide hormone. It involves all steps of synthesis, storage and processing of the protein synthesis. जो मैंने starting में बोला था. Then first step यही बताया मैंने, for protein synthesis initial genetic code present होता है chromosome 11 पे, short arm होती है, long arm होती है, short arm पे जीन होता है इंसुलिन के लिए, जीन एक्टिवेट होता है जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है एंड डीएनए सीक्वेंस ओपन हो जाती है. फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, फिर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, फिर वो अटैच होता है राइबोसोम से. साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो राइबोसोम से अटैच होता है. क्यों? उसका रीजन मैं समझा चुकी हूँ. देन मैसेंजर आरएनए एसोसिएट होता है विद द फ्री राइबोसोम इन द साइटोसोल. फिर इनिशियल ट्रांसलेशन बिगेन होता है, that leads to formation of the signal sequence. Then signal sequence contains hydrophobic amino acids and signal sequence will take the messenger RNA and ribosome to the rough endoplasmic reticulum. जो मैंने पढ़ाया वही मैंने स्लाइड में ये लिखा है पूरा, राइट? इतना हमें समझ में आ गया. लास्ट में क्या हुआ? सिग्नल सीक्वेंस ने क्या किया? इट विल टेक द मैसेंजर RNA and ribosome to the rough endoplasmic reticulum. Now ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, इसे हम समझ चुके हैं डायग्राम को, राइट? Now let's draw the rough endoplasmic reticulum. Now this is rough endoplasmic reticulum. Just draw the structure in your copies. Rough endoplasmic reticulum. This is the structure of the rough endoplasmic reticulum. Now what happens? This initial segment will drag the messenger RNA and free ribosome to the rough endoplasmic reticulum. जो हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा था ये चीज. Now what happens? हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नाउ व्हाट हैपेंस? दिस इनिशियल सेगमेंट, ये जो बना था हमारा ये, दिस इनिशियल सेगमेंट will drag the messenger RNA and free ribosome to the rough endoplasmic reticulum, and then this initial segment will penetrate the endoplasmic reticulum. ये जो दिख रहा है हमको ये चीज, दिस इनिशियल सेगमेंट, ये दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या करेगा? इट विल ड्रैग द, ये खींच के ले जाएगा मैसेंजर आरएनए को और फ्री राइबोसोम्स को टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे ले आएगा, खींच के यहाँ पे ले आएगा, ठीक है? एंड देन व्हाट हैपन, वो खींच के इसको यहाँ पे ले आएगा. इनिशियल सेगमेंट विल ड्रैग द मैसेंजर आरएनए एंड द फ्री राइबोसोम टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे ले आएगा इसको खींच के. देन व्हाट हैपेंस? दैट इनिशियल सेगमेंट वो क्या करेगा? इट विल पेनिट्रेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो इसको ऐसे छेद कर देगा, फिर पेनिट्रेट कर देगा इसके अंदर. इट विल पेनिट्रेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एंटर द ल्यूमेन. Initial segment will penetrate the endoplasmic reticulum, membrane of endoplasmic reticulum, and enter into the lumen. And now this free, and now what happens? This ribosome, which is a free ribosome, what it does? This free ribosome becomes attached with the endoplasmic reticulum. This attached ho gaya, this free ribosome gets attached with the endoplasmic reticulum, and when these multiple ribosomes gets attached with the endoplasmic reticulum, this endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. अभी हमने बात करी कि नाउ इसने तो पेनिट्रेट कर दिया, इनिशियल सेगमेंट ने तो पेनिट्रेट कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. उसके बाद क्या होता है? और ल्यूमेन में एंटर कर गया. उसके बाद क्या होता है? जो फ्री राइबोसोम होता है वो ये है, फ्री राइबोसोम, ये अटैच हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स बिकम अटैच्ड? ऐसे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, that endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. अगर एक अटैच हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे बहुत सारे फ्री राइबोसोम अटैच हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, then it is called as the rough endoplasmic reticulum. Right? Now what happens? Now if multiple ribosomes are there, अब बहुत सारे राइबोसोम्स है, एक है, दो है, तीन है. Now if multiple ribosomes are there, all these ribosomes are synthesizing the peptide chain. क्या करेंगे? अब बहुत सारे ribosomes हो गए तो क्या करेंगे? या multiple ribosomes हो जाएंगे तो क्या करेंगे? They will synthesize a peptide chain, right? Now this ribosome has synthesized a small sequence. If this has synthesized a small sequence,
initial sequence, it is entered into the endoplasmic reticulum. But other ribosomes have translated more RNA. इतना clear हुआ सबको? But other ribosomes have synthesized other ribosomes have translated more RNA. That means it has made a longer peptide. If it has made longer peptide, then what happens? Then longer peptide is inside the endoplasmic reticulum. Then next ribosome has synthesized a very long peptide. Right? इतना समझ में आया? एक जो है मल्टीपल राइबोसोम अगर है यहाँ पे, एक था, दो थे, तीन थे, बहुत सारे हैं. So all these multiple ribosomes, what they will do? They will synthesize the peptide chain बनाएंगे. इतना समझ में आ गया? अब now one ribosome has synthesized a small sequence, that is initial sequence. एक जो ribosome है इसने तो क्या बना दिया? Initial sequence बना दिया, initial segment बना दिया, which entered inside, जो अंदर की तरफ चली गई. लेकिन जो बाकी ribosome है इसके ऊपर, एक, दो, तीन और भी हैं. What they do? But other ribosome, they have translated more RNA. इन्होंने translate कर दिया more RNA को. That means it has made a longer peptide chain. Then longer peptide chain, what it does? The next ribosome has synthesized a very long peptide chain. एक और ribosome एक और लंबी chain बनाएगा. Correct? As more and more messenger RNA are translated and more amino acid are being added to this chain, due to this initial segment, it keeps on pulling the newly formed peptide chains into the endoplasmic reticulum. क्या मतलब बोला मैंने? As more and more messenger RNA are translated, जितने ज्यादा messenger RNA translate होंगे and more amino acid are being added, और जितने amino acid add होंगे to the chain, due to this initial segment, it keeps on pulling the newly formed, ये pull कर अपने अंदर खींचेगा newly formed peptide chains into the endoplasmic reticulum. Now what happens? As these molecules are going in, they start folding, and when they start folding, they result in a particular structure which we have discussed in the last lecture, that basic peptide. Yes. Can you see in this diagram how it is dragging the endoplasmic reticulum? With this figure, you can easily understand the whole topic. So how it is, cell से कैसे endoplasmic reticulum ये drag कर रहा है, right? Now, so in this diagram, I have shown multiple ribosomes attached to the endoplasmic reticulum. और ये क्या कर रहे हैं multiple ribosomes? They are synthesizing the peptide chain, right? Now, suppose if multiple ribosomes are there, they are synthesizing the peptide chain. Now, one ribosome synthesizes small sequence, other ribosome translates more RNA, other ribosome synthesizes a very long peptide chain, right? More and more mRNA translate, more and more amino acid add to the chain. Then molecules goes in, starts folding and result in the pre-pro-insulin. Pre-pro-insulin हमने last lecture में discuss किया था diagram बना के. So as these molecules are going in, जो इस diagram में ये जो molecules हैं जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, as these molecules are going in, what happens? They start folding and start resulting in the formation of the pre-pro-insulin. Pre-pro-insulin. This. Can you see in this structure? This starts folding and form like this. Pre-pro-insulin. This structure. This is a basic structure. Pre-pro-insulin. It is a pre-pro-insulin. Now, as soon as initial segment has come in and the remaining part of the peptide is synthesized and pulled inside the lumen of the endoplasmic reticulum, meanwhile, a very important enzyme is present here. I'll show you that enzyme in the next diagram. So what I have written in the slide, now initial segment comes in and remain peptide is synthesized and pulled inside the lumen of the initial segment. तो already आ गया ER के अंदर, endoplasmic reticulum के already अंदर आ गया, और जो बाकी की peptides है वो भी synthesize हुए और अंदर की तरफ खींचे चले आए. Meanwhile, उसी टाइम पे enzyme break होता है and enzyme breaks initial sequence. That enzyme is endopeptidases. I'll show you the figure. Yes, refer to this figure. Here is this enzyme. So what happens meanwhile? Meanwhile, an important enzyme, endopeptidase. What is the name of the enzyme? Endopeptidase. This enzyme starts breaking down this initial sequence. It starts breaking down the initial sequence. And when this enzyme
This enzyme is called endopeptidase. And when this enzyme, with endopeptidase, is present in the lumen of the endoplasmic reticulum, so when initial segment is entering, these enzyme start digesting them away. ये इनको digest कर जाएगा. So what happens when they digested away? ये दिख रहा है पेंसिल से. अब इस एंजाइम ने इसको डाइजेस्ट कर लिया, ब्रेक डाउन कर दिया, खा गया, डाइजेस्ट कर लिया. कैन यू सी दिस पेंसिल मार्क्स? इसने इसको डाइजेस्ट कर लिया. देन व्हाट हैपेंस? इट हैज डाइजेस्टेड द, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन. सो प्रो molecule is converted into pro insulin molecule. Now pro insulin molecule, which is properly folded, this proper folding is required for formation of the disulfide bonds. Now in this way, pro-insulin molecule, which are now present in the lumen of the endoplasmic reticulum, these molecules will float, and these molecules will float, and what they do, these molecules will also develop disulfide bonds. These molecules will also develop disulfide bonds. And these endoplasmic reticulum, it will make small vesicles. Endoplasmic reticulum will make small vesicles, and pro-insulin molecules will enter into these vesicles, and these vesicles will bud off, right? इसने इसको ऐसे खा लिया, तो प्री प्रो से प्रो इंसुलिन बन गया, राइट? इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने स्मॉल वेसिकल्स बना लिए. Now this vesicle they bud off the vesicles. यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में, bud of the vesicles. Now which molecule they have inside bud of vesicles? They have proinsulin. You can see proinsulin. They are having proinsulin. There is no pre-component. These vesicles loaded with proinsulin molecules, right? They bud off or remove from here endoplasmic reticulum and go to a special area which is called Golgi complex. They go to the Golgi complex or the Golgi apparatus. Can you see this figure? So यहाँ से bud off होने के बाद ये कहाँ पे गए? Special area में Golgi apparatus. Now these will eventually fuse here and push its contents into Golgi apparatus. Now in the Golgi apparatus, what are these molecules? These are proinsulin molecules, and now these proinsulin molecules are having disulfide bonds. Now another action will start over here. Now what action occurs here? What is that? Another endopeptidase will appear here. These dots, and this will also, now this endopeptidase will act on the proinsulin and break down and separate the C-peptide or connecting peptide. Now what is C-peptide? We have discussed in the last lecture, right? So till now it is clear. हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कैसे ये से बड ऑफ हुआ, कैसे फ्यूज हुआ, गोल्जी apparatus में आया. तो यहाँ पे एक और एंडोपेप्टाइडेस होता है जिसने ब्रेक करा इनको वापस से, और सी पेप्टाइड को इसने ब्रेक कर दिया, right? Now I request all of you to draw this diagram also to have better understanding of this lecture. Now it is clear. Now what happens? So it has breakdown into C-peptide, and in the last lecture we have discussed that finally mature insulin is formed. Now in the end we will discuss basically what happens. So this endopeptidase acts on the proinsulin and break it down and separate the C-peptide. तो जो एक और एंडोपेप्टाइडिस यहाँ पर आता है वो कहाँ पे एक्ट करता है? प्रोइंसुलिन पे, और ब्रेक कर देता है एंड सेपरेट द सी पेप्टाइड. क्लियर? नाउ बी चेंज होती है. अब सी पेप्टाइड भी कट हो गया, तो क्या बचा? बी चेन एंड दी सी चेन. सो बी चेन हैज 30 अमाइनो एसिड्स एंड ए चेन हैज 21 अमाइनो एसिड्स, राइट? सो जो हमने बात की थी एंडोपेप्टाइडिस की, इसने क्या किया? इस सी पेप्टाइड को सेपरेट कर दिया. सो बी चेन हैज 30 अमाइनो एसिड्स एंड ए चेन हैज 21 अमाइनो
acids. So with this we complete with our lecture. Thank you.